बेटा पैसे की जरूरत, कई लोग मुझे कहते हैं गोयनका साहब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा बिल्कुल, कब तक, जब तक आपने देखा नहीं है। अरे गरीबन, आपने क्लास 12 पास करी ना, वहां से अभी आप आए हो, रिसीव करी। अब जस्ट इमेजिन जिस दिन क्लास 12 पास करी थी कितना मुश्किल था। अरे रब्बा एक बार पास करा दे बस, 12th करा दे बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। यस और नो? अभी थी कोई 12th का बच्चा आपसे मिले, बोले बॉस 12th बड़ा डिफिकल्ट, बोले पागल हो क्या? बहुत आसान, बिकॉज यू क्रॉस दैट। अभी पैसा नहीं है, आप 100 करोड़ आपने कहा मुझे चाहिए, कैसे चाहिए भाई? सर, as I said, I want to be a YouTuber. बराबर है। YouTuber में you have to that you are not one YouTuber. The n number of people who are into YouTube and they do not know how to do it. Competition की कोई चिंता नहीं है। आपको पता है बेटा, when I got into drones, I realized इतनी दुनिया में पढ़ाने जाता हूँ, more than 61 countries I have traveled. At the age of 56 I realized इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रिस्क टेकर है ना फार्मर है। उसको मालूम ही नहीं कि जो मैं उगा रहा हूँ, जो मैं बो रहा हूँ, वो मुझे आएगा कि नहीं आएगा। वो बरसात के भरोसे है, दवाइयों के भरोसे है, वो मौसम के भरोसे है, वो कैसा वेदर होगा, कैसा चलेगा। Can you imagine what kind of risk they take when they do it? But they are definite. वो जब वो बीज बोता है ना बेटा, उसको मालूम, उसका ये गट कहता है कि मैं गेहूं बो रहा हूं और मेरे को बाद में 20 टन गेहूं मिलेगा, और वो 20 टन के लिए प्रार्थना करता है, तब जाके उसका गेहूं होता है। What I'm trying to say, you have to be very definite in life. If you see this, he's Andre Agassi. He's a world top tennis player. He has written a book called Open, and he has written in his book, I hated tennis. कौन कह रहा है? वर्ल्ड का टॉप लीडर कह रहा है कि I hated tennis. So he says that why? He says I just made my passion of getting tennis and he reached to the top. मेरा आपसे एक ही निवेदन है, create your passion and that is how it works. Yes sir. So he was a top guy and read this book. He says I hated tennis, but he made a goal that yes I want to achieve this. Yes, anyone on entrepreneurship please? Yes ma'am. I want to get into entrepreneurship and start my own event management company, and my goal is to organize some of the biggest events in India. Like अभी G20 हुआ, उसको भी किसी कंपनी ने होस्ट तो करा ही होगा। I want कि like फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो तो my company should be the first preference of the person to organize any event. But sir एक वो fear है, like fail, company fail कर गई, या फिर what I get to nowhere in point, nowhere in life. So you have a choice बेटा। आपने कहा फेल हो जाएगी तो मैं नहीं करूंगी, आप ट्राई करोगे हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या लिखाया? इफ यू ट्राई यू मे फेल, बट इफ यू डू नॉट ट्राई यू फेल बाय डिफॉल्ट। यू गॉट नथिंग टू लूज राइट नाउ। इवेंट कंपनी अपनी स्टार्ट करने से पहले इट वर्क समवेयर। जो आपका छुट्टी का दिन है, जो आपका संडे है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल फोन, गो आउटसाइड, ऑर्गेनाइज सम स्मॉल इवेंट्स। पहले अपने एरिया में, पार्क के अंदर, सीनियर सिटीजन के साथ, बच्चों के साथ, इतने सारे एनजीओज हैं, उनके साथ कुछ काम करें। उनको बोलिए चलिए मैं आपका इवेंट, you start learning small thing and that is how you go to next step. Yes, that's my initial plan to like work. Initial नहीं, आप ये निकाल दो कि मैं फेल होंगी। यदि आपने सोचा G20 करना है तो बस करना ही, चाहे फिर वो इंडिया में हो चाहे नेक्स्ट टर्की में हो। अरे गरीब ये तो कहीं भी हो सकता है। इवेंट में ये क्या लिखा है? मैं भारत की हजारों कंपनियों को जानता हूं जो इंडिया के बाहर काम करती है। बी डेफिनेट, मेरे को 10 बजे पहुंचना था, मैं पहुंचा। दैट्स एंड ऑफ इट। हैव कमिटमेंट टू योरसेल्फ। हम फेल इसके लिए होते हैं क्योंकि हम कमिटेड नहीं। एंड यू नो आपके वर्ड्स इतने पावरफुल है ना, जो आप अपनी ब्रेन को कमांड दोगे वही आपको मिलेगा। पता है हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम अपने कमांड को हम ब्रेन को कंफ्यूज रखते हैं। सुबह कहेंगे आई वांट टू गो टू अमेरिका, फिर शाम को कहेंगे नहीं यार वहां के लोग अच्छे नहीं है। Now your brain is confused, किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। That is why we don't get what we achieve. Make a plan, make a strong plan, and give command to your brain day in day out कि मुझे यही पाना है।
and most important, be grateful to your people. यदि आपको किसी ने कहा कि I am running an event company, be grateful to it. Be grateful to your parents. Be grateful to your teachers. इस दुनिया में बेटा दो ही टॉप प्रोफेशंस हैं, टीचिंग एंड पेरेंटिंग. रेस्ट इज ऑल विंडो ड्रेसिंग. आपने कहा ना 100 करोड़ मेरे पास हो जाएंगे तो मैं सब कुछ पालूंगा, कुछ नहीं होगा. टुडे के टाइम में 100 करोड़ कुछ भी नहीं है बेटा कमाने के लिए. And I'm talking with my experience. I run a program with different IIMs in the country where we take 24 hours, a batch of 20 people. And we start working 10 o'clock in the morning and we finish like that 10 o'clock. And people have a plan कि मुझे करना क्या है. But these 20 dedicated children, they don't sleep for a minute. Me and my team also, we don't sleep for a minute. But we have a plan. We have a plan in place कि करना क्या है, उसको achieve कैसे करना है, उससे पाना कैसे है. And that is what is very important. अब मैं आपको कहूँ कि guys, how many of you are ready to work 24 hours to make a plan? अबे यार 24 घंटे जगना पड़ेगा, मोबाइल अलाउ नहीं होगा, कितना मुश्किल काम. So you have a choice. And when I went to IIM Ahmedabad, out of 100 guys, 90 were ready. Yes sir, we want to work 24 hours to create a plan for us. Yes, anyone on entrepreneurship? Yes sir. Sir, I hope I am taking it right way. Huh? Sir, I want to be an influencer, but I'm not that well confident I want to be, but still I try. My speaking skills are not so good. बेटा मैंने कहा नहीं, but think ये सब छोड़ने आज से. You said I want to be an influencer. You said I want to be an influencer. और आपने कहा कि but I'm not confident. How can you create influence? Sir, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, I'm talking with my experience. But just imagine Professor Oda call me here and he said, Goenka साहब, teach our children how to be healthy in life. Will you listen to me? अब वो आपने तो देख पहले. You need to walk the talk. If you have to create an influence, you work for it. और इन्फ्लुएंस बोलने से नहीं होता बेटा. आप जो काम करेंगे छोटी छोटी एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस करेंगे. You know how I created this ashram when I was at Nizamuddin railway station? दो छोटे बच्चे जिनके पेरेंट उनको स्टेशन छोड़ के चले गए और रात भर स्टेशन पे कोई नहीं मिल रहा था, ठंड का टाइम था. And I was at the platform. So these two children, when they were moving around, crying here and there, I went to them, picked them up, और मेरे पास लेके आया. मेरे पास एक कंबल थी, उन दोनों बच्चों को मैंने उसके अंदर बिठाया. And they were crying. मैंने कहा भगवान मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं इनका कैसे करूँगा. So I went outside. I picked up पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट, 2 चाय लेके आया, उन बच्चों को दूध लेके आया, उनको दूध पिलाया और वो जो पार्ले जी का बिस्किट था उनको खिलाया तो उनके चेहरे पे स्माइल है. I had no money. मुझे मालूम नहीं था कि लाइफ में क्या होने वाला है. I worked outside on a tea shop. उसने कहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा 2 बच्चों का खाना चाहिए. And that is how I started my ashram and I got 50 children afterwards. So I had a choice to try for myself कि मेरा खुद का ठिकाना नहीं, औरों का कैसे होगा. But I said मेरा जो होगा सो होगा, जब तक पैसा है जो कुछ है इनका तो ठीक करूं. And sir, today if you meet those children, one has done IIT and one is a doctor. If you come to my ashram, you must meet them. कि how life changes. मेरा आपसे क्या कहना है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया. Why to make noise? आज आपको सच्ची पूछे तो क्या तकलीफ है? You got pocket money. When I was walking down, I could see the top mobile phones you have. मेरे पास भी ऐसा नहीं है. You got top shoes. You got top brands. You better, am I right or not? You got everything in your life. Why to make noise? You work on a plan, and believe me, it works for you. Be respectful, which is very, very important. Sound करना चाहिए.
Sound coming? Okay, guys. So can you please help me to raise your finger? Can you raise your finger, please? वैसे भी भारत में उंगली उठाना बहुत आसान काम है, सो प्लीज और इसको आराम से घुमाइए। मैंने क्या कहा, रेज योर फिंगर और उसको आराम से घुमाइए, थोड़ी नींद भी चली जाएगी। एंड प्लीज पुट इट ऑन योर चिन। सो विच इज योर चिन, दिस और दिस? कई लोगों ने यहाँ क्यों रखा? यहाँ पर यहाँ क्यों रखा? सिंपल है ना, क्योंकि तूने रखा। So what I always say in life, it's most easy to blame someone, and that is how it goes. So I hope this will work now. And so it's not working, so I'm not going to play. So what do you see here now? So what do you see here? Do you like these flowers? Haji, do you like this tulip? Yes. So this is better or this is better? Why? So दोनों ही ट्यूलिप है, पर सिर्फ फर्क कितना है? ये ऑर्गेनाइज्ड है। So what I always say that everyone in this world, each one of you have a great talent, great aura, great energy, but the only thing is they're all scattered here and there. If you put your energy in the proper way, it's going to work for you in a very big way. And what we see now? So you see a dot or a white space? So the minute I say what do you see? You said, many of you say dot. तो 200 इंच की स्क्रीन है, 90% लोग डॉट को देखते हैं, ना कि व्हाइट स्पेस को। What I want to tell you that each one of us has got great potential, just look into it. And what do you see now? What do you see here? 30? And what do you see now? What is it 13 or IB or what was it? So it is what, ABC? So what was it? And what is it now? Why? So when I spoke about branding for you, it is very important for you to create a brand for yourself, right from the college days. क्योंकि आपके जो दोस्त होंगे ना, आपने स्कूल में देखा ना, जब आप स्कूल में थे, जब भी कुछ बदमाशी होती थी एक लड़का ही पीटा जाता था, तूने ही किया होगा और उसको ही मार पड़ती थी। Why? Because that is the way people look at it. And can you please help me to understand who is right and who is wrong here? Both are? दोनों सही है। क्यों? Because everything we hear is an opinion, not a fact, and everything we see is a perspective, not the truth. It all depends on you, how you look at life. And I always believe, guys, and I want you to speak louder with me on this. It said, don't waste your time with, because people only hear what they want to hear. So create a story for you, and that what I feel is very, very important. And I always believe that two people can see the same thing, disagree, yet both be right, because it's not logical. It's more of a psychology. And what I want to tell you, friends, can you please help me to understand कि कौन किसको दौड़ा रहा है और होना क्या चाहिए? So what I want to tell you is कि हमें कोई और कंट्रोल करना है। किसी का, oh, you are looking very nice, बोले अच्छा, oh, you are looking very dull, किसी का अच्छा, and you just go down. So work on your energy, which is very important. मैंने गोल की बात करी, I spoke about goal, and there are two variety of people who are sitting in front of us. Number one, there are one category of people who get up in the morning, they have a goal, and they shoot for that goal. उनको मालूम है कि मुझे ये करना है,
And the second category of people, they also get up in the morning. But पहले वो शूट करते हैं और जहाँ गोली लग गई वो कहते हैं यही मेरा गोल है. And that is what they achieve. So my first request is, please create a goal for yourself, which I feel is very very important. So when I ask you guys कि please help me to understand कि कितने लोगों ने गोल का लिखा, तो 2-3 ने तो कहा can you please सर आपने कुछ लिखा नहीं लिखा, क्या लिखा बताइए? I want to be a news anchor. News anchor. Sir, I want You are doing a journalism course here. yeah, sir. So sir, I want to be part of all national and international events. I want to be in Aaj Tak news channel. You have to go to Aaj Tak News Aaj Channel. Tak news channel. अच्छा अभी तक देखिए जितने लोग बोल रहे हैं जर्नलिस्ट के बोल रहे हैं, और भी तो कोर्स कर रहे होंगे आप? यस सर. सर माई सेल्फ नितिन एंड मेरा जो गोल है वो है कि अपने पेरेंट्स को पहले खुश रखना और पेरेंट्स को खुश रखना हाँ, कितना मुश्किल काम है मालूम है? दुनिया का सबसे नहीं। मुश्किल काम ही है. मेरे पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव हैं मेरे से, बहुत अच्छी तो इस चक्कर में मतलब और दूसरा है कि मुझे म्यूजिशियन So I want everyone to give a good round of applause. 90% time what you hear is वो सपोर्ट नहीं करते. मैं जो बनना चाहता हूँ बनने नहीं देना चाहते. सर आप उनको आके समझा रहे हो, तुम नहीं समझा पाए मैं क्या समझाऊंगा? But good. सर मेरा है कि मैं म्यूजिशियन और प्लस ट्रैवलर बनूं, जैसे कि मैं अलग अलग जाके इवेंट होता है और फेम चाहिए मुझे थोड़ा सा और थोड़ा क्यों चाहिए? मतलब उतना नहीं चाहिए बट थोड़ा मोड़ा कितना चाहिए? थोड़ा कितना मतलब? कि इतना जाऊं कि जहाँ मैं जाऊं वहाँ 3-4 लोग तो मुझे जान ही लें कि हाँ ये 10 में से 3-4 लोग. हाँ बस इतना ज्यादा नहीं. और लास्ट है कि मैं अपने नहीं पर ज्यादा क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं कि 10 के 10 लोग जाने? नहीं उतना नहीं चाहिए मुझे. और लास्ट है कि मैं अपने रिलीजन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे कि अलग अलग जैसे भगवत गीता मैं स्टार्ट किया पढ़ना भी, पर धीरे धीरे और भी जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे हिंदू धर्म के हैं उसमें जानना चाहता हूँ और डीप में जानना चाहता हूँ कि असल में जानना चाहता हूँ कि 5000 साल पुराना है कि 5 करोड़ साल पुराना है, ये जानना चाहता हूँ. So what I always believe बेटा जहाँ तक रिलीजन की बात है कि everyone is good. ये सब आपका नजरिया है कि आप उसको किस नजर से देखते हैं और आपका बिलीफ सिस्टम क्या है ना? There is a huge difference between belief and faith. You could believe something, but you may not have a faith. Are you getting my point? So belief and faith में बड़ा फर्क है. You create a belief for yourself, you create a faith for yourself, and I'm sure you want to achieve. और दूसरा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहते हो कि मुझे 3 लोग चाहिए? कई बार ऐसा होता है आपको कोई नहीं जानता, कई बार होता है आपको सारे जानते हैं. इतनी बड़ी दुनिया है. So don't give us stoppage in your plate कि मैं ये चाहता हूँ ये नहीं चाहता हूँ. सेलेक्टिव मत बनिए. जब आपने एग्जाम किया आपने सोचा था कि नहीं मेरे तो 82 आएंगे तो ही मानूंगा, 83 आ गए तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा. ऐसा तो डोंट बिकम सेलेक्टिव. यू वर्क हार्ड एंड आई एम श्योर यू गेट इट. मैंने यही सोचा लाइफ में और यही पाया है कि आप सेलेक्टिव मत होइए, आप आगे बढ़िए एंड यू अचीव द बात. यस प्लीज. हाँ जी. सो वी आर टॉकिंग ऑफ गोल. आई कुड सी सम गर्ल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Sir, I wanted to ask Yes. you a question. यस मैम. The tennis player you mentioned here, आंध्र काशी. yes. So, can you achieve something that you hate? You are not interested in. Why not? If you have to work for it, you can definitely. But like, I don't think like I am not interested in dancing, but I know dancing. You But I know dancing, but I'm not interested in that. I'm interested in singing. So what's your question? So, should I follow my passion or the thing I'm good in? It all depends on you. जिसमें आप अच्छे हैं वो भी करिए, जिसमें आपका पैशन है उसको भी कोशिश करिए. Then why it's definite? How did it get definite?
No, so it depends on you ना. If I say कि नहीं आपको डांस अच्छा नहीं लगता, डांस ही करो. Singing लगता है ना, वो ही करो. See, you once if you want to have something, you try both. For example, when you're in school, you play all the sports, but you don't do excellence in all the sports. You keep on trying. You try football, then you try cricket, and then you try volleyball, and then basket, and then so आपको लग रहा होगा कि शायद मैं सिंगिंग में अच्छी हूँ, या आपको लगता है कि मेरे को डांसिंग नहीं, पर maybe your body language is something else. If you ask me, you are great in dancing. So maybe if you keep on trying, your body language will make you because that is your belief system, what you believe in and what you don't believe in. Yes. तो मैंने कहा ना एक बार एक लड़का था, एक लड़की थी, तो you know she was, आपने देखा होगा ना एक दो पोल लगे हुए उसपे एक तार लगा और एक लड़की बैम्बू के सहारे उसको क्रॉस करती, देखा कभी? Yes. तो एक बार एक लड़की थी और रोज शाम को 4 बजे आती थी, अपना लगाती थी, उसको क्रॉस करती थी, people used to clap. One evening she came in and she saw कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और जैसे लड़के सबने ताली बजाई कि वाह मैम आज तो हम सब पूरे इतने सारे लोग हैं, कहते नहीं मैम we talk to so many people and everyone is interested looking at you. तो she came in और वो जैसे करने लगी, जब करने की बारी जब वो जाने लगी ऊपर तो उसने पूछा कि आप में से कितने लोग मानते हैं मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगी? तो सबने कहा मैम क्या बात कर रही हो, 100% आप क्रॉस कर जाओगे, आप इतनी अच्छी, हम तो रोज आपको देख रहे हैं. बोले आर यू श्योर? बोले यस. बोले काम करो आप में से एक आदमी मेरे कंधे पे आ जाओ एंड आई वांट टू क्रॉस विद हिम, और सब भागे वहां. So they all had a belief, but they didn't have a faith in it. So there's a big difference in faith and belief. So you need to have a faith in what you are. कई लोग ऐसे हैं जो उसमें अच्छे नहीं होते और उनको लगता नहीं मुझे अपना पैशन करना चाहिए, and they do that. आप में से देखिए ना, जब मैंने कहा एंटरप्रेन्योर बनना है, 5 बच्चों ने मुश्किल से हाथ खड़ा करा, जबकि मैं आज बताना चाहता हूँ आज के तारीख में it is the best time in the world to be an entrepreneur. पैसा अवेलेबल है, फंड अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, and I'm sure you should get in. Anyone has the right to get into entrepreneurship. But sir, आपने बोला that. but मत लगा. Okay, sorry. बस मुझे इसी He थोड़ी सी mentioned- तकलीफ है. Only he mentioned that he hated tennis. हाँ, but then he says कि no. He says that initial stage वो सेम चैलेंज था ना, उसको विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगा. And he said टेनिस कैसे खेला जाए, इतनी देर कैसे स्पोर्ट में कोई रह सकता है. But then he came and he tried and then he said, वो बुक पूरी आप पढ़ेंगे, मैंने खाली एक ही लाइन कही उस बुक में, उसने कहा कि नहीं, जब मैंने देखा दुनिया में कि लोग अपना पैशन कैसे आगे लेके जाते हैं, a sports is one thing which can make you hero overnight, and he says I work for it. Who is the top runner in the world? 100-meter रेस में who is the top है? Same goal. वो पता है पूरे लाइफ टाइम में कितनी देर दौड़ा है? He is the richest sports guy in the world. कितनी देर दौड़ा मालूम है आपको? पूरे लाइफ टाइम में वो मैडम खाली 3 मिनट दौड़ा है. But for the 3 minutes, He made history. he worked for 30 years. He worked hard for it. Success आप किसी को भी पूछिए, सक्सेस किसी को भी ना ओवरनाइट नहीं मिलती है. You need to work for it. And जो लोग डेफिनेट होते हैं ना मुझे काम करना है, तभी वो सक्सेस पाते हैं. Can I ask you a personal question too? Personal, yes, why not? देखिए मैं तो एक पब्लिक का फिगर हूँ. There's nothing personal about me. So, did your father talk to you after that? Yes, 18 months he didn't talk to me because जितनी फैक्ट्री थी सब मेरे नाम पे थी, मेरे नाम से ही ओन होती थी. चूंकि we are a joint family, so my 3 brothers took over. My elder brother and my younger brother supported me a lot. और इस वजह सपोर्ट मेरी वाइफ ने किया मुझे. She said no, do what you want to do. And 18 months क्या होता है जब बाप बेटे का झगड़ा होता है ना, तो माँ सब ज्यादा पीसती. So on Diwali when I went to my home and so my mother said to my father कि शंकर मिलना चाहता है. My father से मैंने कब मना किया. And my mother came to me, she says कि तेरे भौजी तेरे से मिलना चाहते हैं. मैंने कहा मैं कैसे मना कर सकता हूँ. So my mother fixed a time at 10 o'clock in the morning. So when I went to my dad, मैंने कहा भौजी, मेरे फादर से बोल क्या बात है. मैंने कहा कि आपने मुझे बुलाया. कहते मैं तो नहीं बुलाया. तो बस so I turned to my mother and my mother says, don't do this. I just went to my father and I hugged him. And I said, Dad, I'm sorry. And he just hugged me and he says, what my father
said to me was, he says, it's not that कि मैं तेरा पैशन में या जो तू करना चाह रहा है उसमें रुकावट है. मैं सिर्फ इसलिए वरी था कि now you're already 39. You got 2 children. They are too young. And what you're doing, you never done in your life. So I was only worried about you and your family. That's how you take it. But he says, just 2 months back I saw you on TV. And I cried whole night and I prayed for you. कि तूने मेरे बेटे को इसमें भी सक्सेस दिलाई. My father is my best mentor and he is my best guide. My father is one, to whom I respect the most in my life. So that every time in every program and every session I go, your faculty who is here, they know me for this. So every time I say children, कि दुनिया में 2 ही लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए. दुनिया का हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए और दुनिया का हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे जाए. Learn to respect your children. और पता है मैं टीचर क्यों बना? Because of my son Parth. He is my guide. He is my guru. Because when I was running industries, how I decided to be a teacher. So when I was running my factories, I was doing very well. Huge empire. Used to travel 300 days worldwide. And my son and Parth, Parth used to come back from a school, start bringing books somewhere, shoes somewhere, coffee somewhere, and always used to make noise. And my daughter Radhika, when she used to come back from a school, she used to put books properly, shoes properly, and copies properly. मैं जब भी समाज में, सोसाइटी में दोस्तों के बीच जाता था, मैं कहता था मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ वैसे ही करती जैसे मैं चाहता हूँ. बुक्स अपनी जगह, शूज अपनी जगह, कॉपीज अपनी जगह. और बचपन से पार्थ एक ही बात सुनता है कि बदमाश है, बदमाश है, और वो मान बैठा था कि मैं बदमाश हूँ. And my son Parth never saw his father in me. हम 2 लोग एक ही घर में बिल्कुल अपोजिट तरीके से रहते थे. After 55 days of my travel to Russia, I was having a business in Moscow. I came back from a 55 days trip. As I was walking into my house, I could hear Radhika and Parth speaking to each other. And Radhika says, "देख पापा आ गए." And Parth says कि दीदी, प्लीज पापा को समझाना कि मैं बदमाश नहीं हूँ. क्या आफत आ गई यदि मैंने बुक, शूज, कॉपी ठीक से नहीं रखी. Radhika says, "Why don't you tell about Papa?" He says, क्योंकि पापा मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे. And that has changed my life. That was 10th September 2006. And that was the time I realized in my life that it's good to make money. It is good to have balance sheet. I was known in my family to put a factory every second year. And I decided I don't want to do this. I want to be a teacher so that I could help people and I could help my family. So, about Parth, when he was pretty young, and this is a story of how I became a teacher. So, he used to write 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 correctly, 6, 7, 8, 9, 0 correctly. और Parth कभी भी 5 नंबर ठीक से लिखता था. So जैसे ही उसको जब भी 5 ठीक से लिखता था वैसे मार खाता था. तू ठीक से नहीं सकता है. And that was the time when तारे ज़मीन पे came in. And that was the time, ये हंसने की बात नहीं बेटा. That was the time it so unfortunate happened
that every single person started calling him dyslexic. Society, school, his teachers, his friends started calling part dyslexic. और बात में मैं भी उसको dyslexic बोलने लगा. और जैसे जैसे बड़ा होने लगा वो और उसकी शक्ल गिरती गई. One fine evening, me and Parth, we were traveling together. We went to a restaurant. So me, my wife, Radhika and Parth, four of us, we went out, and as we came out of the restaurant, जैसे ही हम दोनों बाहर आए, मैं चूंकि ऑफिस से स्ट्रेट गया था, we had 2 cars. So my wife says कि मैं राधिका एक में जाते हैं, आप और पार्थ एक में आ जाओ. And Parth was telling, नहीं मम्मी मैं आपके साथ चलूंगा. And somehow during that few seconds, Radhika sat with my wife's car, and Parth was with me, and he was just बिल्कुल silent हो गया. So as I was driving, I asked him कि पार्थ बताना बेटा तू 5 क्यों नहीं ठीक से लिख पाता. जो कुछ नहीं बोला, मैंने फिर दोबारा पूछा कि पार्थ बताना तू 5 क्यों ठीक से लिख पाता. जब मैंने उसका ऐसे हाथ धीरे से पकड़ा तो उसने कहा पापा आप मुझे मारोगे ना. मैंने कहा मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा. So we stopped. He was silent. I stopped car. मैंने कहा बेटा तू बाहर आ. He stood out. मैंने कहा बता क्या बात है. तो उसने कहा पापा सच बात तो ये है कि मैं डिस्लेक्सिक नहीं. मैंने कहा मैं तुझे नहीं कह रहा हूं तू डिस्लेक्सिक है, पर मैं कह रहा हूं तू 5 क्यों नहीं ठीक से लिख पाता. तो पता है दोस्तों पार्थ ने मुझे क्या कहा. पार्थ ने कहा पापा बात तो ये है कि जब आप मुझे पढ़ा रहे थे आपने मुझे 1 2 3 4 बहुत अच्छे से पढ़ाया. जब आप मुझे 5 पढ़ाने लगे आपका फोन आया और आप बाहर चले गए. जब आप वापस आए आपने मुझे 6 7 8 9 0 पढ़ाया. आपने मुझे 5 नहीं पढ़ाया. And he said, Dad, I am dying every day of my life when people call me dyslexic. तो मैंने कहा तूने मुझे क्यों नहीं कहा कि आपने मुझे 5 क्यों नहीं पढ़ाया, और आप ये तू क्यों नहीं बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे 5 नहीं पढ़ाया. So what Parth said to me was, because Dad, I love you so much in my life. I taught him number 5. It took me 5 days to teach him number 5. After that, he was all India topper. He was 100 out of 100 in class 10 in mathematics in account. He went to class 12. He went to DU with 99% marks in economic honors. He was again did very well there. And he makes strategies for the company. So the point what I'm trying to tell you is, it's so easy to make noise in life. और मुझे लगता है कि दुनिया में पेरेंटिंग इतनी बड़ी कमी है ना, इतनी बड़ी गलती है कि many times people make mistake and they don't understand their children. So I'm writing a new series. I just did a shooting last month, and in that serial I have the name of the serial is My Father is Better Than Me. Always tell people that guys, respect your parents, respect your teachers, and most importantly, respect your parents. पता मैंने क्या लाइफ में देखा, हम अपने आप की रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहते. यदि हम अपने काम की, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, दुनिया में कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. Learn to respect. Have confidence. If this one girl can start a bakery, each one of you can start one thing or the other thing. There is so much of opportunity in life. Believe me, friends. मेरे 2 दोस्त, इनको आज मैंने इनवाइट करा यहाँ पे. ये भारत की बेस्ट मशीन चला. मैंने सर को इनवाइट करा यहाँ पे. सर का इनका बहुत ही बड़ा प्रिंटिंग का काम है सर नारायण. मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे जाएं, इनके प्रिंटिंग यूनिट को विजिट करें और देखिए दुनिया में कितना बेहतरीन काम करें. एंड सर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई भी जो बच्चे इंटर्न करना चाहते हो
इनके यूनिट में जाके इंटर्न करिए, ताकि आपको लाइफ में सीखने को मिलेगा काम कैसे होता है और बेटर क्वालिटी कैसे दी जाती है। देखिए काम सब लोग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है काम अच्छा हम कैसे करें। आई फील दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैम, आई होप यू गॉट माई स्टोरी। Yes, sir. So my father is very good with me. Both my children are very good with me. They are heading home. And you know, as I grew and when they finished their college, I told them that you make money, but there's no social angle. So my daughter Radhika, she is a career counselor. She is Google की highest reviewed girl है. And my son Parth helped 6,000 children to come out of drugs. He is a national awardee in drug eradication. My request to each one of you is have faith in you. आप कुछ भी करिए, आप बिजनेस करिए, आप जॉब करिए। पता है जॉब करना भी एंटरप्रेन्योरशिप है। यू नीड टू हैव ओनरशिप कि बॉस ये काम मेरा है। जब तक कोई भी काम आप अपना समझ के करोगे ना, आप कभी फ्री नहीं हो। आपको जॉब भी, मैंने देखा कितने बच्चे कह रहे हैं सर आई जस्ट वांट टू गेट अ जॉब। यदि जॉब में भी जाना है ना, जो आदमी आपको रख रहा है वो बहुत एनर्जी के साथ, बहुत ईमानदारी से, बहुत पैशन के साथ आपको रख रहा है। Have full faith. मैं अभी सर के साथ बता रहा था, last week I was in Pune. I just came yesterday morning, and I went to teach at MIT Pune. And when I was talking to a friend of mine from different colleges, यार शंकर तुझे पता है, Delhi Bharati Vidyapit is doing better than Bharati Vidyapit Pune. It was a big shock to me. I said yes, because there is so much of energy sir has put in. There is so much of discipline in this college. I could see your teachers, they were so very hard. इतनी एनर्जी के साथ काम करते, and that is the reason. मैं जब इस कॉलेज में पहली बार पढ़ाने आया था आज से 15 साल पहले, तब 2000 बच्चे थे, 7000 बच्चे हैं। कैसे यहाँ से यहाँ तक का सफर तय हुआ? I feel that is what is achievement. You see G20, it happens everywhere in the world. I do not know how many of you have seen G20 so closely on media. Please go today evening and watch G20. The way India has displayed is something most amazing in the world. Top leaders in the world, they had a smile. First time G20 हुआ। यदि आप G20 पिछली बार का देखेंगे, you see the leader. There was no smile. There was hardly smile on anyone's face. It was just a protocol. Discipline. Agenda. Program after program. And you see this time world leaders came in, and there was a different smile on everyone's face. He made everyone to eat Indian food. They had millet, they had vegetarian, they had so many different Indian food, and they all went with great feeling from here. Can you imagine? President George Gordon was so happy here. He was shaking hands. It's unusual for Americans. Are you getting my point? Life में बेटा काम सब करते हैं, आप डिफरेंस क्या लाते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक सर ने मुझे कहा इन्फ्लुएंस के ऊपर, so please remember my line. It says, do not underestimate your influence on the people opposite to you. आपको जीवन में मालूम ही नहीं कि जब भी आप कोई से पहली बार मिलते हैं, आप किस तरह का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर छोड़ के जाते हैं। और याद रखिए, जब भी आप लाइफ में कोई से पहली बार मिलते हैं, उसी समय मन बन जाता है, इससे मेरी बनेगी, इससे मेरी नहीं बनेगी, और उसी के साथ आप पूरे जीवन रहें। So create a faith, create an influence. When I got into this auditorium, I could see everyone's face. आपका चेहरा है ना बेटा, सब कुछ बताता है कि what is going on in your mind. So please take your finger like this again. और मेरे साथ बोलना है, आपने बोलेंगे? आपने कहना मेरे चेहरे पर, आवाज ही नहीं आई, मेरे चेहरे पर, ऐसे नहीं, वैसे करना है। मेरे चेहरे पर 44 मसल्स है, डू इट लाइक दिस, 44 मसल्स। मेरे चेहरे पर 44 मसल्स है। मैं सिर्फ 4 मसल्स खाने के काम में यूज करता हूँ, बाकी 40 मसल्स ये बताती है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, और जो मेरे दिल में चल रहा है वही मेरे चेहरे पर आता है। So the point is, your face is everything. You meet someone, यदि आपको पूछा क्या बात है, बड़ा खुश लगा, and you meet someone, he says, oh shit man, ये फिर दिन बिगाड़ेगा।
So when you come to college, every morning when you get up, you should have a faith in you. You should have a trust in you. You should have an energy in you that yes, I'm going to be different. Every single session I go with the same energy. You see me at 6 o'clock in the morning or you see me 11 o'clock in the night. You see me, God has given me strength that yes. Why? Because I feel that is what positivity is all about. Life is all about, just creating happiness. Life is all about, making it strong. मैं आज आपके बीच में आने का मेरा एक ही रीजन है कि आप आने वाले 3 साल यहाँ पे रहेंगे. आपकी जो प्रोफेशनल स्टडीज है उसको आप पूरा करेंगे. Live every day of your life. Every day morning when you come to college, come with a commitment. I want to do this. I want to change this. I want to be different. I want to create. I want to bring in knowledge to this college. और मेरा ये मानना है कि आप कॉलेज आपको क्या दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप कॉलेज को क्या दे रहे हो इंपॉर्टेंट. देश आपको क्या दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप देश को क्या दे रहे हो आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं. आप अपने पेरेंट्स को क्या दोगे आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब जॉब करने जाओगे ये इंपॉर्टेंट नहीं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या दे रही है इंपॉर्टेंट है. आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हो आई फील दैट इज वेरी वेरी. यू आस्क एनी एंटरप्रेन्योर, दे आर one of the top entrepreneurs I know in my life. They do not believe anyone who's joining their office. But the challenge is, it's all about how you take it, how you do it. I think that is what is very, very important. So can I have some question answers from you, please? Yes, sir. Sir, isn't it, although entrepreneurship is a very good field, but isn't it risky? Isn't it risky? मैं आपसे क्या था? Not taking risk. But sir, even आपको कैसे मालूम कि आप जॉब में जाके सक्सेसफुल होंगे? sir, because we have calculated it at least. कोविड के बाद में कितने लोग टच से बाहर हो गए? आपको पता है ना अभी रिसेशन वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, कितनी नौकरियां खत्म हो गई. जेट एयरवेज बंद हुआ, 1 लाख रुपए की नौकरी 10,000 भी नहीं मिल रही. सो रिस्क किसी में भी हो सकती है और किसी में भी आप जीत सकते हो, किसी में मार खा सकते हो. आपने अपना काम ठीक से करना है एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. यदि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं आपको कोई ना कोई ले ही लेगा. कितने सारे लोग हैं आज किसी भी कंपनी में. मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम ऑन बोर्ड ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. लोग कहते हैं नौकरी नहीं. मैं कहता लोग ही नहीं. I got 80,000 jobs. I am not finding free. Why? Because no one wants to talk extra mile. If you are ready to work hard, there is ample opportunities available. You go for interview when you finish your college. You participate. You just say about your degree, this, that. You'll be out from that interview. But you speak about what you have done, how you want to achieve, and what kind of value you are going to add. जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जो भी कंपनी का आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे, उसके बारे में पढ़ के जाइए. कंपनी क्या करती है, कितनी पुरानी है, उसकी फिलॉसफी क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके लिए नया आप क्या कर सकते हैं. And they will immediately take to it. You got my point? So that is. So don't फेल का तो बेटा कोई डेफिनेशन नहीं. बिजनेस का आपको कोई गारंटी नहीं. और मेरे कितने दोस्त हैं वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी पोजीशन पे सब छोड़ के कुछ काम कर खेतों में काम करें. दे वांट टू गो बैक टू देयर होम टाउन एंड दैट दे वांट टू वर्क देयर. मेरे अपने सर्कल में करीब 100 ऐसे लोग हैं. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. दे से दे वांट टू डू समथिंग फॉर अदर. फाइंड योर पैशन, वर्क फॉर इट एंड देन यू गेट इट. I hope I answered. And दूसरा सोचना कम करो, एग्जीक्यूशन ज्यादा करो. So before I say anything, I would like to say something about you. You're great and an excellent business magnate. You're a great speaker, and you're a great man. And being such a valuable person, with whoever you're working with, what do you look for? That you know you can trust this person, or that this person will execute the goal that they are assigned to. So what was your question, sir?
Sir, I was asking, what do you look for in a person that you're working with? No, what trait do you see? What trait I see? Yes, yes. So whenever I hire someone or when I say someone want to work with me, I always see the emotional question. I never went for intelligence. क्योंकि देखिए जो काम फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आएंगे तो जो काम मैं कर रहा हूं वो अभी आपको नहीं आता, मुझे आपको सिखाना पड़ेगा. तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई एम अ पीपल्स पर्सन. फॉर मी पीपल इज इंपॉर्टेंट. सो आई सी कि जो आदमी मेरे साथ जुड़ रहा है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, वो ह्यूमन वैल्यू की कितनी रिस्पेक्ट करता है, उसको कितना इंपॉर्टेंट है जो कि नेचर को लाइक करता है, उसका अपना वैल्यू सिस्टम क्या है. एंड दूसरा मैं देखता हूं उसके पास डाइवर्स उसने क्या किया. सो इफ अ फ्रेशर कमिंग टू मी, आई से भैया तुमने कॉलेज में क्या क्या काम किया. उस जगह साहब मैं थिएटर में था, आर्टिस्ट था, मैंने ड्रामा किया, मैंने ये किया, मैं इस चीज में था. इवन वो 50% का बच्चा होगा, ही ओके फाइन. सो फॉर मी जिसके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी को अपने साथ काम में जोड़ता हूँ या मेरे पास करता हूँ. मेरे पास बहुत सारे बच्चे एज ए इंटर्न आते हैं, दे आर वर्किंग विद मी फॉर लास्ट 10 years 12 years 15 years. सो व्हेनेवर आई हैव समवन, मैं सबसे पहले देखता हूँ ये आदमी इमोशनल कितना है, लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करता है, जब आप कोई से मिलने जाते हैं वो कैसे आपको बिहेव करता है. आई फील दैट्स अ वे आई सी इट. एंड एनीवन हु इज वॉकिंग इनटू मी, इट टेक्स मी वेरी लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड की. और मैं 2-3 काम ऐसे जब वो बाहर वेट कर रहा होता है या बाहर कर रहा होता है, आई सी कि वो लोगों के साथ कैसे मिल, उसी टाइम उसको पानी भी मिलता है, उसके टाइम उसको चाय कॉफी भी सर्व होती है, वो बाहर औरों से बैठा होता है. Is he saying thank you? Is he grateful? Is he saying hello to everyone? I feel that for me that is more important than his degrees and qualification. I never had anyone. I never hired anyone in my life only based on degrees. So for me, human values and relationship is more important. मैंने आपसे शुरू किया तब क्या था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं आपके संपर्क कितने, इम्पोर्टेंट है आपके संबंध कैसे हैं. Relationship for me is very very important, and that's what I teach. That is what I Yes sir. Anyone else got any question? She asked me a personal question, I answered. You are more than welcome to ask me any questions and I'll be more than happy to assist. Anyone please in this auditorium? या आपको कुछ लगता है कि आपको अपने लिए कुछ जानना है, so that I can help them to go to next level. Yes ma'am. You're so silent. Is all right. So for me, what I always say, goal is very important, and I always say whatever you want to do, keep it in your mind. Give your brain a positive command, because it's all about garbage in, garbage out. If you put right things will come out. मेरा ये मानना है कि रूट अच्छा होगा, फ्रूट तभी अच्छा होगा, आपने अपने ग्राउंड वर्क पे काम करना है. और दूसरा मेरा मानना है जो ब्रेन है ना सर, ये बिल्कुल अलादीन के चिराग, वो आपसे ये पूछता है कि बोलो हुकुम मेरे आका. And that is how it works. And this very beautiful song I wish video काम करता, but just see guys this time. Sure you all have it. Arya? आर्या आवाज नहीं आ रही?
How was it? आवाज आई नहीं? So I always say, guys, learn to respect your parents, and it all happens because of your brain. So the program on which I work has won Nobel Award in 1981. So there was an American doctor, Dr. Roger Sperry. He dissected a brain, and he discovered that you have two hemispheres of brain, left brain and he also discovered that the left part of a brain controls right part of a body, and right part of a brain controls. उन्होंने ये भी पाया कि right brain देखती है, left brain बोलती है. Means you meet someone after a long time, long many years, and you say, अरे राम, कहाँ था यार? स्कूल के बाद नहीं मिला, कॉलेज के बाद नहीं मिला, कितना बड़ा हो गया? And many times you meet someone and all of a sudden in a coffee shop, restaurant or mall, and you start talking to that person. क्या हाल है? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक तो चल रहा है ना? पर पीछे का ब्रेन कहता है रब्बा नाम तो याद दिला दे, इसका नाम तो याद दिला. Because he don't. Why? Because left brain sees that person, put that picture to the left brain, and left brain says, "Hello Ram, how are you?" So we have a. So this program won Nobel Award in 1981, and then he had a student, Dr. Paul Torrens. He divided brain into 4 quadrants, and so I work on this research, and it says that when children are 2-year-old, they are 98% creative, and when they are 10-year-old, they are only. And the bad news for all of you, after 25 years, जब लोग 25 साल के हो जाते हैं, they are only 2% creative. आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी वैसे वैसे खोती जाती है. पर सबसे तकलीफ क्या है कि within 2 to 10 years, 8 साल के अंदर हमारे बच्चे 66% क्रिएटिविटी को खो देते हैं. तो 10 साल का बच्चा कहां जाता है? You go to. So who takes away the creativity? School and the parents. क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, you create so many boundaries against him. लाइन के ऊपर मत ले, लाइन के नीचे मत. बाल क्यों नहीं बनाए, शूज क्यों नहीं पॉलिश करी, होमवर्क क्यों नहीं किया? You create so many tie against him. तो शुरू में तो बच्चा मना करता, नहीं पापा, नहीं मम्मी, नहीं टीचर, नहीं मैम. फिर कहता भाड़ में जाने दो, कोई सुनता तो है. And you start doing what you say. And life is all about your experience. You go to a restaurant, it's all about your experience. You have a good experience or you have a bad experience. Whenever you meet someone for the first time in life, you create that experience और उसी के सहारे आप आगे बढ़ते. और रिसर्च ये भी कहती है कि life is all about feeling also. इस बच्चे को नहीं पता ये मेटल का है, और उसने देखा जैसे वो बच्चा गिर गया, he goes and try to pick him up. Life is all about feeling. Remember guys, you may get job because of your intelligence, but you get work only because of your behavior, and behavior is very important. And what it says, if whenever you meet someone for the first time, you are standing on 2 sides of a bridge. और आप हर समय कोशिश करते हैं जानने की कि तू कौन है, पर मेरा मानना है लाइफ में कि ये इंपॉर्टेंट है जानना कि मैं कौन हूँ. So when you know each other, you form a better relationship, and that is what wow factors we say. Life is all about building sustainable quality relationship. You meet someone, don't fake it. Create that in-depth bonding with that person, and you keep on going for that. So someone asks, एक बार एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि mom, how will I be able to find the right woman for me? And mother says, बेटा, don't worry about finding the right woman. Concentrate on becoming the. Am I right or wrong? So work on this. इसीलिए सर का ये बहुत ही फेवरेट शेर है, और शेर ये है कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी क्यों परेशान रहता है कि वो खुद को नहीं बदलता. और मिर्जा गालिब ने कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ करता रहा. आई फील आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप अपने आप पे काम करें. वर्क ऑन योरसेल्फ. एज आई सेड, व्हेन यू कम टू कॉलेज टुमारो मॉर्निंग, ड्रेस अप नाइसली, प्रिपेयर योरसेल्फ. आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग हो. हैव अ नाइस हेयर कट. आपको जो भी रखना है, मतलब डू इट नाइस एंड देन कम हियर, फॉर्म अ नाइस ग्रुप, फॉर्म अ कंपनी ऑफ ग्रुप, 3-4 गुड पीपल, हैव अ पॉजिटिव टॉक, एंड देन यू गो टू नेक्स्ट लेवल. बिलीव मी, इट वुड हेल्प. And I feel this is a great time of our life where we can go to next level. And I always say your thinking is very important. यदि मुझे आपके साथ काम करना है, if I know my thinking and if I know yours, we have a better feeling. और यदि हमारी feeling better होगी, तो हमारा behavior अच्छा होगा. यदि हमारा behavior अच्छा होगा,
तो रिजल्ट का आउटकम अच्छा होगा। सब लोग बात करते हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, बिहेवियर की, और मुझे लगता है कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका बिहेवियर, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा गया है कि जाती रही भावना जैसी, जो आपको जैसा पसंद है आप सामने वाले को वैसे ही देखते। यदि आपको कोई आदमी पसंद है आपको सब कुछ हराना लगता है, और यदि कोई आपको नहीं पसंद है आपको उसको सब कुछ खराब लगता है। तो क्रिएट अ थॉट, वर्क ऑन योर फीलिंग, और जो मैंने आपको शुरू से 12 बार 10 बार टोका है, स्टार्ट यूजिंग द वर्ड फील, नॉट थिंक, एंड यू बिकम बेटर। So what do you see here? One picture, two picture. So what do you see in this picture? One is organized and One is, other is, one is Radhika's table, other is, और मजे की बात है दोनों एक दूसरे को पागल समझते हैं। बिकॉज जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग हैं उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना पसंद है। दे आर द काइंड ऑफ पीपल बिलीव इन फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर, रूल्स, रेगुलेशन। जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग हैं इनके चेहरे पे हंसी ढूंढना मुश्किल काम है। इनका कपड़े पहनने का तरीका भी व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। ये लोग 2 दिन के लिए जाएंगे, 5 दिन के कपड़े पैक करके जाएंगे। बोले भाई 5 दिन के लिए क्यों? 2 दिन। बोले बरसात आ गई तो, अंधेरा हो गया तो, ट्रेन छूट गई तो, इनकी तो ही नहीं खत्म होती। आप इन लोगों को यहाँ के विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, लेफ्ट ब्रेन पर्सन से, है ना? कई लोग कैसे ग्रीट करते हैं, हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? सब पीपल, उनको लगता है पैसे, हम बात करेंगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे। मैथमेटिक्स, हर चीज में नंबर्स, मेरा क्या फायदा होगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राहुल द्रविड़, एक्सट्रीम लेफ्ट ब्रेन बैट्समैन। जब भी क्रीज में जाएगा सेम शॉट अगेन एंड अगेन, आप देखिए उसको एक चीज को रिपीट। जो लेफ्ट ब्रेन के बच्चे होंगे ना, एक चीज को बार बार, मैम फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, देयर लॉट ऑफ टूल्स, उनके क्वेश्चन ही खत्म होते। एक काम को बार बार रिपीट करेंगे, इनकी जो भाषा होगी कैसे होगी, इस तरह की होगी। माइक बेसिकली जो लेफ्ट ब्रेन लोग हैं, जैसे ही सेज कि दे बिलीव इन, दे आर नो नॉनसेंस पीपल, दे बिलीव इन फैक्ट्स, फिगर्स एंड नंबर्स, एंड आई ऑलवेज से दैट if you obey all the rules you miss all the fun, because for them rules, regulation, structure is more important than anything else। इसके विपरीत जो राइट ब्रेन के लोग हैं वो बिल्कुल बिंदास होते हैं। वो लोग कैसे हैं? वो कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन, बिकॉज दे ऑलवेज ए मस्ती इन देयर लाइफ। लेफ्ट ब्रेन का आदमी थी 10 बजे की ट्रेन होगी, 8 बजे स्टेशन जाके बैठ जाएगा। बोले क्यों? बोले ट्रेन जल्दी आ गई तो। और राइट ब्रेन का आदमी 10 बजे की ट्रेन होगी, बोले घर में बाजू में तो ही विल जो राइट ब्रेन का आदमी होगा ना, वो कभी ऐसे नहीं बात करेगा शांति से, बॉडी और क्या है ऐसे, देयर इज लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, दे शेक लॉट, एंड यू सी ऑलवेज स्माइल। राइट ब्रेन के बच्चे आर वेरी गुड विद एक्सक्यूजेस। कई बार आपको लगता है कि इसको थप्पड़ मारो या अपने आप को मारो। दे आर क्रिएटिव, इमोशंस, न्यू आइडियाज ऑल द टाइम, एंड दे बिलीव कि पीपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर लेफ्ट ब्रेन पीपल आर नॉट इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट, मेरा क्या फायदा होगा इज इंपॉर्टेंट। फॉर राइट ब्रेन पीपल आर इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन इज वेरी। जब आप राइट ब्रेन के लोगों से बात करो, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, ओ भाई साहब, पिक्चर तो अभी शुरू हुई। If they meet someone, they always say everything in much. They always want to have fun in their life. That is what is very important. So you see, when teacher teaches you, many times they focus on some children. Left brain people, they pick it on you. तू ठीक नहीं करेगा। जैसे many times I say people don't get into, most of the time in coaching classes, because what you learn in coaching class is different than what you learn in school. So I was on a TV show and someone asked me, what is the difference in coaching teacher and a school teacher? So I says, जो कोचिंग का टीचर होता है वो नंबर्स के लिए पढ़ाता है, और जो स्कूल का टीचर होता है वो आत्मा से पढ़ाता है। If you ask him, he knows everything, क्या हाल है, he'll ask you emotional question. In coaching classes, don't ask me emotional question. So I said that is what the difference. So right brain people are emotional, they like music.
जैसे गोल का कहा, इन लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम है गोल बनाना। सो वो कहेंगे यार पता है इसकी फैक्ट्री चालू कर दें, काम करने नहीं यार इसकी करेंगे। सो दे ऑलवेज शिफ्ट, कीप ऑन शिफ्टिंग हियर एंड देयर। फॉर दैम इमोशंस, पीपल, imagination is more important. For left-brain people, rules, regulation, step-by-step approach is more important. And if you see, there was a question paper in it was says कि cold और chill के तापमान में क्या अंतर होता है। तो बच्चे ने लिखा cold और chill के तापमान में कुछ भी अंतर नहीं होता, दोनों ही ठंडे होते हैं, केवल भावनाओं का अंतर होता है। क्योंकि कॉफी कोल्ड होती है, पढ़िए इसे लिखा, कॉफी कोल्ड होती है और बियर बियर चिल्ड होती है, कॉफी कोल्ड होती है। तो टीचर ने कहा कि भाई आपकी टीसी तैयार है, आप अपने फादर को दिला। बिकॉज राइट ब्रेन पीपल ऑलवेज बिलीव इन इमेजिनेशन, दे बिलीव इन न्यू आइडिया, दे बिलीव इन क्रिएटिविटी, दे आर मल्टीटास्किंग, दे वांट टू डू 10 थिंग्स एट अ टाइम। इफ यू सी दिस पर्सन, आई एम श्योर यू विल गेट टू नो कि sound is not there, but I am sure from this video you could make out what I am trying to speak. Right brain people are multitasking, you know. So they are the kind of people, if they sit in a class, they can't sit for a longer time. I could see in this class, could see a lot of right brain children. वो ऐसे बैठे होंगे, आपको थोड़ी देर में सुनेंगे, फिर they'll keep on shifting here and there, here, you know, and they try to grab your attention. So for example, teacher is there, so I see someone, तो लोग नहीं बेचारा कितना परेशान है, so they just try to say, you know, you are, they keep on moving here and there. जो right brain का बच्चा होगा, so many times they get stuck to certain ideas, and I feel in society, your left brain also, your right brain also, you just need to manage with each other. If you see Virender Sehwag, he's an extreme right brain batsman, he's a risk taker. जब भी क्रीज में जाता है सोचता मैं 100 रन बनाऊंगा, and he take risk and he go to next level. And if you don't understand each other, this is the way you look at each other. जो लेफ्ट ब्रेन का आदमी था वो हरदम सोचता था कि इससे मेरी कभी नहीं बनेगी. And Amir Khan always used to say that, you know, this teacher is not good at me. So Three Idiots is the great example of left brain and right brain people. आप में से कई को लग रहा होगा कि कभी हम लेफ्ट ब्रेन होते हैं, कभी हम राइट ब्रेन होते हैं. यस और नो? आप में दोनों हैं. क्योंकि यदि आप लेफ्ट ब्रेन नहीं होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, और यदि आपका राइट ब्रेन नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा. Because right brain is a visual picture. You have both the brains, but after the age of 18 years, knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously, you use dominance of your brain. So either you use left brain or you use right brain. That's why you see when your parents speak to you, many times some parents they accept everything. जैसे आपने कहा कि my parents are supportive, because they listen to him and he feels that, you know, he's supportive, and that's the way how it looks. So guys, this is most important in my life. It says use your influence, not your power. आप लाइफ में जैसे जैसे बड़े होंगे आपको लगता है become more powerful. No, people like you, they talk to you because you are influential, not because powerful. और इस दुनिया के दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं मदर टेरेसा एंड प्रिंसेस डियाना. This is a book called Leadership by John C. Maxwell. उसमें लिखा है कि when Princess Diana died, 2.4 billion people watched her funeral. Not because she was beautiful. The n number of women were more beautiful than Princess Diana. Not because she was princess. There are n number of princes. People do not know them, but they were influential. दोनों की डेथ में एक ही वीक का फर्क था. She died on 31st August 1997, and Princess Diana died. Mother Teresa died on 5th September 1997. So they are the two top. So मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप इस कॉलेज में आए. It's not about job what you get. It's not about what money you will make. It's all about what kind of influence you will create. I feel that is what is most important. And I'm not saying this. This is published in 1996. Daily Mail के अंदर publish आया था जहाँ पे दोनों create हुए. And if you see from Indian perspective, these are the two top examples. जितने लोग ऊपर के हैं ये सारे influential हैं. जितने लोग नीचे के हैं
वो सारे पावरफुल। इसीलिए कहा गया है कि सत्ता तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती है। Guys, work on your that is very very important. So your parents have got you here. Work on your influence. I feel that is very important. और मेरा लास्ट में आपसे ये कहना है कि monkeys are great climbers, but even monkeys fall roughly. Yes or no? You know why? Because nobody is perfect. What I want to tell you is perfection की कोई definition नहीं है। इस दुनिया में every man want to have a perfect woman, and every woman want to have a perfect man, and the best thing is perfect does not exist. So please do not go for perfection. और मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन लाइन है, वो लाइन ये है कि anyone can make mistakes. हम में से कोई भी गलती कर सकता है, but बात ये है कि आप अपनी गलती से सीख कर कैसे आगे बढ़ते हैं। And I want all of you to read this slide loudly with me, which says, सड़क कितनी भी साफ हो, दूर तो ही जाओ, और इंसान कितना भी अच्छा हो, दूर तो ही जाओ। So don't worry about making mistakes. With this note, thank you so very much for your time, for being so patient with me, and I'm thankful. If I could support you in any of the capacity, you are more than welcome to join us. Namaste. Friends, is such a great teacher, such a passionate person. Wherever he is, it is because of his own hard work. It would have been very easy for him to follow the business of the parents, inherited industries and factories to him. But as I always say, कि जो कांटों में खिलता है, शोलों में फलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। बहुत पहले दो पंक्तियां लिखी थी कि इन्हें इनकी कामयाबियों से न तौलो, इनकी कोशिशों पे भी एक नजर दौड़ा लो। ठीक ही डॉक्टर शंकर गोयनका साहब, मेरा तकरीबन 16-17 साल पुराना संबंध है साहब। किसी कॉलेज के वो भी इंडक्शन प्रोग्राम में इन्हें इनवाइट करना आसान नहीं है, लेकिन आई एम फॉर्चुनेट टू गेट दैट प्रिविलेज फ्रॉम हिम कि मैंने जब भी कभी उनको फोन किया हो, कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि वो इंडिया में है, तो कभी भी मुझे मना नहीं करते। He deserves an standing ovation from all of us. And thank you so much, sir, for the confidence which you keep on giving to me. आप तो पिछले 15 सालों से भारतीय विद्यापीठ को जानते हैं, मुझे जानते हैं। प्लीज विजिट। हमारी फिलॉसफी यही है कि एक अच्छा प्रोफेशनल जरूरी नहीं है कि एक अच्छा इंसान भी होगा, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा एक अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है। I have not seen anyone who is a good human being and is not a successful professional, successful entrepreneur. But the reverse is not true. इसीलिए लाइफ में भारतीय विद्यापीठ और पर्टिकुलरली दिल्ली कैंपस ने ये फॉलो किया है कि हम सिर्फ एक टोटल क्वालिटी प्रोफेशनल बनाने की रेस में उस रेस को फॉलो नहीं करेंगे। वो एक बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप आएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक अच्छा इंसान इस इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल कर भेजें। वो इंसान जिसकी पर्सनालिटी से अपने आप में खुशबू आए, और खुशबू ऐसी आए कि समाज का कोई भी बंधन या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी जो उनके स्पेसिफिक लिमिट्स हैं वो उनको अपने कैदोबंद में जकड़ न पाए। तो वो खुशबू आए इस इंसान से, और जो इंसान खुशबू देख लेता है अपनी अच्छी इंसानियत का, उसके बारे में दो पंक्तियां हैं कि बड़ी मुश्किल में हूं कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे तुझे गिरफ्तार करूं। आप खुशबू रोक सकते हैं, खुशबू को पकड़ सकते हैं,
तो हर एक इंडिविजुअल जो भारतीय विद्यापीठ में आए उसे एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी पर्सनालिटी से अच्छे इंसानियत की खुशबू आनी चाहिए, ताकि समाज में आप जिधर कहीं भी जाएं वो आपकी खुशबू आपके एब्सेंस में नजर आए, आपका इन्फ्लुएंस और आपका इम्पैक्ट आपके एब्सेंस में नजर आए, और चाह कर भी कोई उस खुशबू को गिरफ्तार न करे बल्कि इंस्पायर हो और फॉलो करना शुरू करे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा चेंज है प्रोग्राम में चेंज ये है कि लंच के बाद जो ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन होना था वो हमने लंच से जस्ट पहले रखा है, और ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन की टीम रेडी है ग्राउंड में। जैसा डॉक्टर शंकर गोयनका साहब कहते हैं कि डिस्पाइट बीइंग और डिस्पाइट हैविंग ए बैलेंस फ्रॉम द राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन, इनकी टीम पहले रेडी है वहां और हमारा इंतजार कर रही है। तो जो स्टेट अवे कैफेटेरिया ब्लॉक है, आप कैफेटेरिया ब्लॉक के सामने जो ग्राउंड है वहीं हमें चलना है, उसी ग्राउंड में ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके बाद आपका लंच ब्रेक है, और लंच ब्रेक के बाद आप यहाँ आइस ब्रेकिंग सेशन 2, बस सर्कल अंताक्षरी कॉन्टेक्स्ट है, वो आइस ब्रेकिंग सेशन 2 ही है, वेयर स्टूडेंट्स कैन शो देयर टैलेंट, देयर कैपेबिलिटी, देयर स्किल्स कि कौन कितना बढ़िया गा सकते हैं, कौन कितना बढ़िया कह सकते हैं। मैं 18,000 स्टूडेंट्स के लिटरेरी क्लब का सेक्रेटरी हुआ करता था, और ये सारे प्रोग्राम लिटरेरी क्लब के सेक्रेटरी किया। So thank you so much. So we are straight away meeting on the ground, just next to cafeteria block. ठीक है? Thank you. So we are blessed to have such a big visionary who has unyielding pursuit of excellence. A huge round of applause to sir. And now I request Professor sir to give a source of memento and appreciation from BVICAM. A huge round of applause. So we all see you at ground, and this will be considered your third session, and the attendance would be taken again at the ground.